So, Aleena, have you done your work? Yes, sir. Mm. Any doubt from the last class? No, sir. So we were in this topic now. Any question from the last class? No, sir. Every topic is clear. Yes, sir. The copy skills. Mm. Yeah. So in the last class, we were doing this concept Lee Chatler principle. Uh, how change in pressure or volume or addition of inert gas or uh, you know giving heat is changing the reaction, or it is affecting the rate of reaction. Not rate of reaction, but means how it is the reaction is going in forward direction or backward direction. Yeah. So we were doing effect of addition of inert gas. Okay. So gas can be added in two ways: at constant volume as well as at constant pressure. Okay. Yes, sir. Huh. So let's see what happens. एक second. Uh, when we are adding inert gas at constant volume, you have to remember that no change in the state of equilibrium. Okay. And when we add inert gas at constant pressure, so equilibrium will shift towards lesser number of gaseous moles. ठीक है? Yes, sir. Hmm. Let's see some example. We have this example 2H2 plus CO2. Everything is in gaseous form. It is making CH3OH. ठीक है? This is also gas. This is also gas. This is also gas. What we are doing? Addition of helium gas. ठीक है? At constant pressure and constant volume. चलिए बताइए.
what will happen? Equilibrium will shift towards towards CH3OH. Which one you are answering? Constant pressure or constant volume? There are two cases. Pressure Acha. Air equilibrium will shift towards forward direction CH3OH. or acha to forward direction. Yes, sir. ठीक है next. At constant volume. No change है ना? Yes, sir. ठीक. So at constant volume, if we add any inert gas, there will be no change, and if constant pressure, it will move towards lesser number of gaseous moles, right? ठीक है. Effect of catalyst we have done, no effect, है ना? This one, right? Yes, sir. Ah. So I have given questions in which addition of inert gas was also there. You have done it, na? Or left that one? Sir, I'm writing this. अच्छा अच्छा. ठीक. Now in homework, I have given some questions which was asking about addition of inert effect of addition of inert gas. Done. Sir, writing. Mm. You have to know the definition as well of the Chatelier principle. What we have done in the earlier classes, this is that thing only. This was given by this scientist. So just note it down in your notebook. Yes, sir. Equilibrium.
So your chemical equilibrium chapter is over. Done. No, sir, writing. बताइए हो गया? Yes, sir, done. Okay, good. Now tell me, just can you explain this Le Chatelier principle to me in your own words? So, in an equilibrium, Hmm. um, if the conditions are changed, Like what kind of conditions? like temperature, Okay. for example, temperature is changed, then the Hmm. um, equilibrium moves in the other direction, like the opposite direction. Before it's moving in one direction, then it will change its course to the opposite direction. Like for example, I have increased the pressure. Okay. What will Yes. happen then? If it's going in forward direction, it will go in backward direction. No, reaction is in equilibrium. It is not going in any direction. It is. It seems like it is has been stopped. However, at microscopic levels, things are happening. बताइए. For example, we have like this. H2 plus O2 is giving H2 H2O, and here we have 2. Okay. All are in gaseous state. Okay. Now I have Yes. increased the pressure. Tell me what will happen. The rate of formation of H2O is also a rate of dissociation of H2O. Means rate of reaction is rate of forward reaction, rate of backward reaction is same. So system is in equilibrium. What will happen if we increase the pressure of the system where this equilibrium has been established? बताइए. हाँ जी.
हेलो। Sir, I don't know. क्या? Sir, I don't know how to explain. अरे जो लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना करिए, जैसे करना वैसे एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। बोलिए। चलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं, सही जवाब दे दीजिए। हम्म। बोलिए। जवाब दे दीजिए सही, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन मत करिए, मतलब जो जो दिल करे वो करिए, जल्दी बोलिए। बस थोड़ा ज्यादा लेट नहीं करिए। हाँ जी बोलिए। So, फिर मैं क्या बोलूँ? जो मन करे वो बोलिए। मतलब अरे भाई, ये जो सवाल मैंने किया उसको जिस तरह से आपको मन करे बोल जवाब देने का, उस तरह से जवाब दीजिए। हम्म। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर आप ये एक्सप्लेन कर दो, फिर मैं दूसरे को दूसरा क्वेश्चन दे दीजिएगा, फिर मैं वो कर दूंगी। अरे तो ये तो आसान सवाल मैंने दिया है ना। मैं टफ दूंगा तो फिर तो और नहीं बस जवाब दे पाइएगा। फिर कैसे क्या होगा? अच्छा सुनिए, देखिए ऐसे तो नहीं हो पाएगा। पढ़ाई लिखाई इस तरह से चलेगी तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो आपके पास मैं बता रहा हूँ 2 मिनट है। 2 मिनट में आप बता रहे हैं कहाँ से रिवीजन करिए। यहाँ से आप रिवीजन करना चालू करिए। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे यस कुछ सर। कुछ? ठीक है। यस सर। यहाँ से, और मैं आपको और बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो और आपको नॉलेज ज्यादा से ज्यादा आप उसको एब्जॉर्ब कर पाइएगा। ये टेम्परेचर वाला स्किप कर दीजिए, ठीक है। टेम्परेचर में क्या है, अब देखिए उसमें क्या हो जाता है, केस हो जाता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। अब उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे घटा रहे, हो जाएगा कंफ्यूज। तो ये आप समझने के साथ ही मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये आप समझिए। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद इसको करिए स्किप, दिख रहा है आपको, मार्क किया मैंने एक यस सर। ब्लैक लाइन। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइएगा फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे बात करने के बाद डायरेक्ट आप कॉपी तुम में तो होगा ही नोट्स आपके। यस उसके सर। बाद इस प्रेशर को समझ जाइएगा, ठीक है। ठीक फिर है। यहाँ तक समझिएगा। ठीक है, टेम्परेचर को छोड़ के प्रेशर और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे जोर लगाइए, दिमाग लगाइए। पहले थ्योरी को देखिए, फिर सवाल को देखिए। होपफुली आप आंसर प्रॉपरली दे पाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन। सब हो जाएगा, ठीक है। अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए, और आप ये कॉन्फिडेंस समझिए रखिए अपने अंदर कि आपका दिमाग काम करता है। आप हैं स्टूडेंट समझदार। पहले ही देखिए हथियार डाल दीजिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जो आने वाला भी था ना समझ में, वो भी नहीं आएगा। लगेगा अरे हाँ यार कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सब हो ओके जाएगा। सर। हम्म। उस दिन आपके आपने खुद मुंह से सही एक्सप्लेनेशन दे दिया था, क्योंकि मैंने प्रेशर लगवाया था आपके अपने दिमाग पे। तो फिर से प्रेशर लगाइए, कंसंट्रेशन और प्रेशर पे सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। नोट्स ओके देखिए सर। अपना। टेम्परेचर वाली अभी छोड़ दीजिए, परेशान नहीं होना है। टेम्परेचर वाला भी हो जाएगा, जब ये दोनों हो जाएगा तो टेम्परेचर वाला भी हो जाएगा। दिमाग लगाइए।
हेलो। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. गॉट एनीथिंग? कुछ समझ में आया? हाँ जी। Sir, I went through it. हम्म। आगे बोलिए। क्या और टाइम चाहिए? क्या समझने की कोशिश किया पहले आपने? हम्म। Sir से वो increasing the concentration से वाला फिर हम्म। हम्म। फिर effect of change in concentration और effect of change प- in volume, effect of अरे change in अरे यार, सब नहीं समझना था ना। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, ये दो चीज समझना था ना बस। वॉल्यूम और फिर टेम्परेचर, ये सब तो नहीं समझने के लिए कहा ना मैंने अभी। हमने टेम्परेचर नहीं बोला। अच्छा, तो वॉल्यूम। अच्छा हाँ, क्या क्या समझने की कोशिश की? कंसंट्रेशन और प्रेशर ना। और वॉल्यूम। अरे छोड़िए वॉल्यूम को। तो कुछ समझ में आया? कंसंट्रेशन वाला समझ में आया? यस। चलिए अच्छी बात है। प्रेशर वाला? यस। चलिए समझाइए। समझाइए। हम्म। हम्म। then if concentration changes, हम्म। हम्म। the concentration I mean increases, हम्म। then they start moving in towards and starts moving towards the product, and the reaction is in forward direction. फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। फिर से बोलिए, इतना जल्दी बोल दिया कि मैं उसको वो नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया क्या बोल So when we दिया। increase the concentration हम्म। ऑफ व्हाट? of a reactant, ऑफ रिएक्टेड, ओके। so then this they will like start reacting. So हम्म। it starts moving towards the product. हम्म। So it is the equilibrium is in the forward direction. चलिए सही है। और हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इफ यू इंक्रीज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन देन, What? if we increase the product concentration, for example, there is a case where we have increased the product concentration. Okay, so then what will happen? Then it will be in backward direction. चलिए करेक्ट। चलिए अब प्रेशर समझाइए। बढ़िया, यही था, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। हम्म। And when pressure will like increase, हम्म। then the equilibrium will shift towards the direction where there are lesser number of gaseous moles. हम्म। सही हो गया। और क्या? ये ऐसा तो नहीं है कि आपने बस डेफिनेशन मुझे बता दिया। No, समझ sir. में आया कि नहीं आया कि एक्सप्लेन क्या किया मतलब है आपको तो मैंने। ठीक है। ठीक है, तो बस हो गई बात। और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में ये हो जाता है कि भाई हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे, इट डजेंट मैटर। It matters that the reaction is endothermic or exothermic. If the reaction is endothermic, the reaction will move in forward direction only when we increase the temperature, because it wants more heat energy to, you know, to make the reaction. Yes or no? बात समझ में आ रही है? In endothermic, they want heat, है ना? यस सर। हाँ, तो एंडोथर्मिक में हीट चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो हीट उनको मिल जाएगा, तो वो प्रोडक्ट बन, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने लगेंगे। बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे बहुत ही आसान एग्जांपल कि कुकर में मैंने चढ़ा दिया है सब्जी या गोश्त। अब हीट दूंगा तभी ना बनेगा ना खाना। तो जितना ज्यादा हीट दूंगा, मान लो दाल पका रहे हैं तो दाल को जितना ज्यादा हीट दूंगा उतना ज्यादा दाल पक जाएगी जल्दी। है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ? Yes, sir. हाँ बस सिंपल सी बात। चलिए तो ये सब आपका कंसंट्रेशन मांगता है। और आपका सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं, थोड़ा एनालिटिकल स्किल भी मांगता है कि मतलब आप एनालाइज करके दिमाग लगा रहे हो अपना। है ना? रटने वाला काम नहीं चल रहा है। चलिए तो आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं क्या? अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। Yes, हेलो। sir. हाँ। क्या हो गया? अब क्या दिक्कत आ रही है? सर कुछ नहीं। समझ में नहीं आ रहा? नहीं सर, आ रहा है। हम्म। आयनिक इक्विलिब्रियम। देखिए हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। सारे जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, अगर इक्विलिब्रियम है तो उनको केमिकल इक्विलिब्रियम वो तो हो गया। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब अब आयंस के पढ़ेंगे हम इक्विलिब्रियम, स्पेशली आयंस। ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। एक कटायन है और एक अनायन है। ठीक है। एक कटायन है एक एनायन है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल NaCl ही है, डाल दिया हम इसको पानी में तो ये, नहीं पहले तो हम NaCl ले रहे हैं या कटायन अनायन लिए। ये देखिए आयंस थे, ये आयनिक मॉलिक्यूल बन गया। है ना? पहले तो सिंपल आयंस थे, आयनिक मॉलिक्यूल बन गया। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सही है? है यस ना सर। ये? अब अब हम कुछ कुछ इसमें चीजें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू मिक्स दिस इन aqua सॉल्यूशन और एनी सॉल्यूशन, तो एनी सॉल्वेंट, तो जो वो सॉल्वेंट होगा उनको अ, अच्छा अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जो देखिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे NaCl का एग्जांपल। तो मान लीजिए हमने NaCl लिया, NaCl लिया और इसको हमने डाल दिया पानी में। तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। फॉर एग्जांपल इफ यू टुक NaCl इन द aqueous solution, the bond between ये electrostatic bond between NaCl, ionic bond between NaCl breaks, and the both ions will freely flow in the aqueous solution। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? substances which conduct electricity in aqueous state or molten, aqueous or molten state are known as electrolytes। ठीक है। तो when we put this in water, that dissociates। So because of the presence of cation or anion in the aqueous solution, they will conduct electricity। बात समझ में आ रही है? यस सर। Why they are connected conducting electricity? Because a movement of charge will bring electricity, right? है ना? They will movement of charge, sorry, will not bring, it will conduct electricity। ठीक है। यस सर। Like movement of electron will conduct electricity in a wire, in a solution, if we put एग्जांपल दे रहा हूँ, इन अ वायर इफ वी, अच्छा बैटरी देखा होगा इस तरह से जुड़ा होता है ना? इस तरह से एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक निगेटिव प्लेट होता है। तो द फॉर एग्जांपल देयर इज एयर इन इट, है ना?
So there is a gap. So there will be no conduction of electricity in the system. But if we put water and some ions, so what will happen? The ions will move here and there, so that the electricity starts conducting in the wire. Okay, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Why? Because of presence of cation and anion in the solution. There are other examples as well, like NaCl. It can be KCl also. Okay, it can be KOH also. It can be HCl also, and H plus Cl minus, K plus OH minus, K plus Cl minus. Likewise. बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, तो नोट करिए, हम आगे आपको कुछ कुछ बताऊंगा. When you are done, let me know. ठीक है? Aleena, Yes, sir. when you are done, let me know and try to copy the things fastly. ठीक है? Yes, sir. हम्म. अच्छा, one thing more. They conduct electricity in molten state as well, because if in molten state they are free to flow in any direction, right? Yes, sir. So if they are free to flow, if charges are free to flow, they will conduct electricity. But if they are not restricted, for example, if we take the table salt NaCl in solid form, है ना, which you use in kitchen and all, in our food, they will Yes, not sir. conduct electricity. Why? Because the charges present are not, flowing, okay, or not moving. So that is why they are not conducting electricity. ठीक है? Yes. आई बात समझ में? Yes, sir. Right. So what you are writing currently? So I started strong electrolytes. अच्छा, चलिए. So let's see what it is. So if strong electrolytes are what? They show complete dissociation into ions. Okay, for like this. So like HCl, NOH, CS, CSCl, KBr. What is happening? You don't have to learn it by heart. You will understand it in in a period of time. Like HCl is added in water solvent. So what will happen? This is the acid, right? है ना? HCl is an acid ना, or base. Hydrochloric acid, we say it hydrochloric acid, right? Yes, sir. हाँ. So base will give H plus ions, right? If you don't know, no problem. So they will give H plus, or we can say H3O plus as well.
ठीक है. What is H3O plus? Let me write it for you. If we attach this H plus into H2O molecule, it will give H3O plus. ठीक है. So don't be afraid of this H3O plus. It is same as H plus. बात समझ में आई? Yes, sir. So if we put HCl in a water in the water, what will happen? This will completely dissociate, and the whole Cl will convert into Cl minus, and this H is gone and react with water to give H3O plus. Or you can write it H plus as well, no problem. Both are same things. Okay. Other example like same we have done NaCl will go into, if you put it in water, obviously it will form in aqueous state. ठीक है. आ रही बात समझ में? Yes, sir. But what happens with weak electrolytes? Uh, what happens with weak electrolytes? See, they will not show complete dissociation. They show what? Partial dissociation. बात समझ में आ रही है? पार्शियल मतलब समझ में आ रहा है? फ्रैक्शनल है ना? प्रॉपर डिसोसिएशन नहीं होगा, कुछ परसेंटेज डिसोसिएट होगा इनटू आयंस. नोट कर लीजिएगा, परेशान मत होइए. ठीक है. इनटू आयंस, और इसकी मतलब हम कितना कहेंगे? लेस देन 5% डिसोसिएशन. काफी कम हो रहा है. ठीक है. लेस देन 5% डिसोसिएशन हो रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए. अब आप एग्जाम्पल नहीं देखिए, अब आप कॉपी करिए. ठीक है, फिर मैं समझाऊंगा. ओके. Yes, sir. हाँ, करिए, कॉपी करिए. एग्जाम्पल्स कहीं हैं. ठीक है. Done this strong electrolyte. Yes, sir. Done. Strong electrolyte. I'm very weak. Have you written this thing? No, sir. नहीं लिखा है तो वैसे लिख लीजिए. See what happens ना. Actually, if we write H3 plus in each and every one, in every example, you can understand that the equations are balanced. Otherwise, you have to balance it, right? Yes, sir. So that is why we use H3, we use H3O plus. बाकी कोई इशू नहीं. Done. I'm writing, sir.
चलिए हो गया है ना, हो गया होगा। हेलो 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 हेलो। Yes, हो sir. गया, हो गया। So last example. Sir, हो गया. चलिए, see what is happening. So we are studying equilibrium, right? Yes, sir. So what we can see in strong electrolyte, there is no equilibrium. They will show complete dissociation and the reaction will go only in forward direction. Okay? We cannot Yes. see the reactant in the solution. So it is not in equilibrium, right? आ रही बात समझ में? Yes, sir. Ah. In the weak electrolyte, we can see the reactant is in equilibrium with the product, right? In which CH3COH and this acid is not completely dissociating into CH3CO minus anion, है ना? So uh, we will go in the ionic equilibrium. We will go into detail with these weak electrolytes cases. Okay, so you can add this note that at equilibrium, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. At equilibrium, the CH3COH molecule is in equilibrium with its ion. Hopefully, this is clear to you. ठीक है जी? Yes, sir. So we are going to look into this topic, water acid and water bases. Acid and base. In acid and base, we are going to deal with different kind of definition what we see. First one, we will go to this Arrhenius acid base concept. Then we will go to Bronsted-Lowry acid base concept, and then we will move on to the last topic of acid, yeah, Lewis acid and Lewis base. So let's start with Arrhenius acid base. Arrhenius acid base. So Arrhenius was the scientist, similarly Bronsted and similarly Lewis. So they gave definitions for acid and base according to their understanding or their theory. So let's see one by one. What are they? According to Arrhenius, what is an acid? Acid is which acid are the substances which gives H plus ion in water. बात समझ में आ रही है? So इसके Yes. example, for example, we can see HCl. It will give H plus and Cl minus, right? HNO3, H plus NO3 minus, HI, H plus I minus. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. Hmm. So they will give H plus in the solution when we mix them. H2SO4, है ना? H plus and SO4 minus, CH3 COOH. This example what we have done here, it is giving H plus ion, right? है ना जी? Yes, sir. What are bases according to him? Bases are which gives OH minus, which gives OH minus ion in water when we mix them into the water. What are the examples? NaOH, the most famous one, है ना? KOH, NH4OH,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. So according to him, acid are what? Which is represented as like this, and it will the this bond will break, and it will give A minus plus H plus. In water base, bases are what? It is represented as BOH. This bond will break, and it will give B plus OH minus. Clear? Yes, sir. Ah. According to him, what we have done, the strong acid, this we have done, strong acid are what? They completely dissociates, completely dissociates. ठीक है? Strong bases also completely dissociates. They also completely dissociates. However, weak acid, weak acid partially dissociates, partially dissociates, less than 5%. Right? Yes, sir. Similarly, weak base also partially dissociates. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो नोट दिस डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? नोट करिए। Yes, sir. डन। No, sir.
चलिए, होपफुली यू हैव डन. Sir, I'm writing strong bases. Hmm. They're done. Hmm. चलिए. So let's see some limitations of it. This is the definition given by Arrhenius was very limited. Let's see how. For example, when we talk about NH3, so what is this? A base or acid? Let me tell you, this is a base. Okay, this is a base. However, it has no OH with it, right? Yes or no? Yes, sir. देखिए, for according to Arrhenius, it should give OH minus in the water, but it does not give OH minus with the water. However, this is a base. Its pH is more than 7. This is a base. है ना? And let's talk about CaO. So this is the basic oxide. So these are the limitations which this guy, this Arrhenius, cannot, mm, cannot justify, cannot explain. ठीक है? CaO, MgO, है ना? So these kinds of example, for example, we have this NaHCO3. ठीक है? So this is a what? This is salt. So how this is a salt? For example, NaCl. NaCl is the most popular salt, you may know. Yes or no? बोलिए Yes. भाई. हाँ. So this is also a salt which is Na plus HCO3 minus. ठीक है? A cation and an anion gives salt, right? अरे, speak. What Yes, sir. happened, Aleena? You're not getting anything? I'm getting it, sir. So why you're not responding? Not feeling good? Yes, sir. Why? What happened? Sir, I'm Fever? not well. हाँ? I'm not feeling well. What happened? मतलब fever आ रहा है, cold हो रहा No, है, कफ हो sir. रहा है. हाँ. Simply. Simply खाया पिया कीजिए, ठीक है? NaCl, NaHCO3 salt है, ठीक है? धीरे बोलिए एटलीस्ट. यस नो मत लगाइए Yes, ताकत. sir. दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना यहाँ. तो ये सॉल्ट हो गया उसी तरह से. अब चलिए ये सॉल्ट है. तो if we mix that into water, what happens? It will breaks into Na plus H plus CO3 minus 2 minus. ठीक है? So this is giving H plus, but no, this is not an acid. According to Arrhenius, it should be an acid, right? Because it is giving H plus in the solution. Yes or no? Yes, sir. Hmm. So this is according to Arrhenius. चलिए ये तो आया समझ में ना. और नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस. चलिए ये समझ में आ गया ना, इतना काफी था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस विच इज ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड लॉरी. दो साइंटिस्ट हैं, एसिड बेस. ठीक है? So according to them, what are acid and what are base? According to them, acid are that things which gives H plus. Acid are the substances which gives H plus in aqueous solution. ठीक है? Which gives H plus. सब aqueous solution में ही बात हो रही है. तो सेम है एसिड की तरह, ये आरएनएस की तरह. यस और नो? Yes, sir. एंड विच गिव्स, सॉरी, विच एक्सेप्ट्स. यहाँ पे विच एक्सेप्ट्स उल्टी बात आ रही है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात आ रही है.
which accepts H plus ion. So acid are the substances which gives H plus ion in the solution, and base are the substances which accepts H plus ion in the solution. So let's see how to deal with them. Example से समझ में आएगी अच्छे से बात. If we take HCl and put it into the water, देखिए बहुत केयरफुली देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है. ठीक है. So we already know the product H3O plus Cl minus, right? Understood है? Yes, sir. So let's see why HCl is a Bronsted acid. See, if we take this HCl, HCl is giving H plus and becoming Cl minus, right? है ना? Yes. So this will be known as an acid. Okay? Why? Yes. Because it has donated H plus. बात समझ में आई? If we Yes. see H2O, it has accepted H plus, right? H2O has become H3O plus. So we can say that it has accepted H plus. Yes or no? Yes, sir. So we will say like this. H3O, I'm sorry, H2O is a base. Why? Because it has accepted H plus. Understood? Yes, sir. Good. Now let's take another example so that it will be completely totally understandable. If we have taken NH3 and we have put it into the water, so what will happen? Acha, this is one is a strong acid, so it we will see only this will be a irreversible reaction, and this will be in equilibrium. ठीक है. देखिए क्या होगा. This will form like this: NH4 plus OH minus. So let's see one by one what will happen. NH3 has accepted H plus, right? Can you Yes, see? sir. है ना? So it has accepted H plus. So what NH3 is acid or base? This will be acting as an acid or base. बताइए. अरे बोलो. Substances which accepts H plus is a acid or Base. base. हाँ? Base. हाँ, base. Why it took so long? Uh, let's take another example where in OH2O it has become OH minus. So it has donated H plus, right? Yes, sir. And it has given its H plus. So it will be acid or base? Acid. Acid. So can you see the water is acting as a base one time and acid one time? Yes or no? Yes, sir. Ha. So this is a peculiar case. Um, so what happens? If anything is giving H plus in the solution, it is an acid. And if anyone is accepting H plus, it will be a base according to Bronsted-Lowry concept. ठीक है? Yes, sir. Now note it down. What you have to note from here limitations na? Have you written this limitations? बोलिए. Yes, sir. करिए इसको Bronsted-Lowry concept. Note it down. No, I'm writing.
Done. No, sir. In this, I have to explain something more. This Bronsted Writing the non-bronze formula. formula. कौन सा formula? Cl plus H2 gives H3O plus. अच्छा अच्छा. Hmm. So what I have to say here something more. See, सुन लो. First listen. HCl is reacting to give this. So this is an acid. So if it has denoted H plus, it has become Cl minus, right? Yes, sir. So this will be known as conjugated base. Cl minus will be known as conjugated base of HCl. Conjugated Yes, sir. base. And similarly, this is was the base. So this H3O plus will be known as conjugated acid. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Similarly, NH3 is a base. If it has accepted H plus, it has become NH4 plus. So this will be known as conjugated acid or base. बताइए. Yes, sir. Conjugated what? Acid or base? बोलिए. एसिड लिखूं या बेस? Please. बेस से एसिड होगा ना. If this is acid, this will be known as conjugated base. If this is a base, it will be known as conjugated acid. Okay. Yes, sir. Sorry, because it was base, so I accidentally said base. Acha. H2O is acting as a acid here. So what will OH minus? OH Conjugated minus base. conjugated. Base. Base. चलिए करिए. Done. Sir, I'm writing. अच्छा. हो गया होगा. Yes, sir. ठीक है. Now let's see how to solve this question. This question mentioned in your NCRT. What is meant by acid, the conjugate acid base pair? So in conjugate acid base pair is only a difference of H plus or we can say proton. बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. हाँ. So let's take first example, HNO2. It's a very good example. We have taken HNO2. Let's see how to make its conjugate base and conjugate acid. ठीक है? So let's assume it is acting as a acid, right? So it will donate H plus, right? Yes or no? In one Yes, case, sir. नहीं समझ में. In one case, we are assuming HNO2 as acid. So it will donate electron or accept electron. बताइए. Hmm? So, Hello, sir, hello, what hello. question? If I'm saying HNO2 is acting as a acid, so it will accept electron or donate electron. HNO3 is acting as a No, I'm acid. assuming HNO2 is acting as a acid. So it will donate electron or accept sorry, donate H plus or accept H Donate. plus. Donate. Donate H plus, correct. So it will donate. So I am subtracting this H plus. So it will become what? NO2 minus, right? Yes, sir. है ना? So it will become NO2 minus. So this will be what? Conjugate base or conjugate acid? This will be conjugate base, right? Since we are, this is a pair, na? Acid and base, acid and conjugate base pair. What is the difference here? Only this H plus. बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है. Yes. आ गई. Yes, sir. Let's take another example where we are adding H plus, means it is accepting H plus. Okay. So what will happen? I have added one H plus, so it will become what? H2NO2 plus. ठीक है? Yes, बात समझ sir. में आ रही है? So what will be? It will be a conjugate base or conjugate acid. This is in second case, it is acting as a base. So it is a conjugate base or conjugate acid. बताइए. Conjugate acid. Yeah. Why? Because HNO2 is acting as a base. Yes, And sir. if we add H plus, so obviously if we add H plus to something, it is acting as a base. So its Yes. pair will be conjugate acid, right? Yes, sir. आ गई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है. Let's take another example and it will be completely clear to you. We have the second example is Cn minus. Okay. In first case, what we are doing, we are so we cannot remove, है ना? We cannot remove H plus, right? Because there is no H plus here. Yes or no? Yes, sir. So we cannot remove, but we can add H plus. So if we will add H plus here, what will it become? Acid or base? If something is accepting H plus, it is acting as a acid or acting as a base. सोचिए. Yes. Hmm? If someone is accepting H plus, we can say it is acting as a acid or it is acting Base. as a base. Base. Base, correct. सही. क्यों टाइम लग रहा है इतना बताइए. हम्म. बात तो सही है. You are giving correct answer, but still you are taking so much time. So it is acting as a base. So what will it become? What is the answer? CNH. HCN. Okay. कोई बात नहीं. HCN. ठीक है. So it will be conjugate acid or conjugate base. Conjugate. हाँ. Conjugate acid. Acid. Correct. ठीक है.
एसिड बेस पेयर। बात समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ। One last example. I hope it is clear to you. Yes, sir. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव HS माइनस, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। नाउ इन वन केस what we are doing, we are removing this H plus, ठीक है, and in one case we are adding H plus. So in this first case, this will be a acid or this will be a base when we are removing H plus. बताइए। अच्छा, कौन सा केस ले, बताइए, आप ही बताइए, फर्स्ट और सेकंड। First, हम्म, बताइए क्या होगा। minus H plus. हाँ, so it is donating H plus or it is accepting H plus in the first case, the top one. It's donating. It is giving out H plus, so it will acting as a acid or base. Acid, right? Yes, sir. So what will be the final answer? It will become S. Conjugate base. No, it will, if we will remove H plus, it will become H2 minus, right? Yes, And sir. it is what? Conjugate base, है ना? Yes, sir. ठीक है. In the second case, this is acting as a acid or acting as a base, where Base. H plus is adding, H plus is adding into it. So this acting as a base. बताइए, what is the product we are getting? 2s. 2S. H2s. Yeah, H2S, correct. So this is the conjugate base or conjugate acid? Conjugate acid. Conjugate acid. So clear this whole thing? Yes, sir. Good. ठीक है, तो note it down. क्या नोट करना है, this thing ना, करिए। This question. हाँ हाँ, डन। No, sir.